and we will shift to the different theories of trade cycles or business cycles. The theories of trade cycles basically tries to explain the uh, explain that what are the factors which are responsible for cyclical fluctuations in the economy, and how economy moves from one type of a phase to the another type of a phase of the cycle. Like there are different phases, like there's expansionary phase, there is contractionary phase, there is depression. So how economies, capitalist economies move, capital means free economies जहाँ पे economic activities जो हैं they are organized economic activities are without much interference of the economy. There is capitalist structure in the economies. So in these type of इकोनॉमीज जो इनको हम कहते हैं बिकॉज ओपन इकोनॉमीज हैं, इन दीज टाइप ऑफ ओपन मार्केट्स और ओपन इकोनॉमीज why there's a problem of recession or depression, how it gets emerges, what are the factors which are responsible for it, and what is the mechanism कैसे है, work कैसे करता है. This is what we are going to cover under theories of trade cycles. Right, we have in this our syllabus we have only few main theories of trade cycles, but there are multiple theories of trade cycles of, in like for example in initial theories, the nature, the sun phases of sun has been considered as the as responsible factor for cyclical fluctuations in the economy, for recessions in the economy, because earlier the economies used to be the agriculturist economy. Then agriculture depends on the phases of sun, कि सन का फेज जब चेंज होता है then production goes down, जिनको हम सन स्पॉट थ्योरी कहते हैं. सो देयर आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल कि इतनी पुरानी इतनी तब की थ्योरीज भी हैं when the economies were based on the agriculture sector only, agriculturist economies थी. And we have recent theories also which explain the cyclical fluctuation in the industrial economies, in the mixed economies, right? So multiple theories which explains basically the cyclical fluctuations in the economy are there. We will be covering only few मेन थियरीज, राइट. अगर हम कैटेगराइज करें तो थियरीज को हम उनके फैक्टर वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं. कुछ थियरीज जो हैं दे कंसीडर नेचुरल फैक्टर्स एज द रिस्पॉन्सिबल, सम थियरीज कंसीडर मॉनेटरी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, some theories basically says saving and investment is are responsible for this. So multiple factors are there, multiple factors exist करते हैं. Some theories even say that political business cycles are also there. Political business cycles भी हैं, politics की वजह से जो है cyclical fluctuations आती हैं, because in a democratic countries when the elections are near, right, then during that time there is expansion in the economy because government follows the expansionary policies. They want to allure the people, so they make the expansion in their plan. They spend more, they make more government expenditure, they try to provide more employment in the economy, so there is expansion. And once the elections are over, elections over ho jate hain, then they again come to the contractionary policies. They reduce everything. Again the problem of unemployment arises in the economy. There is contraction in the economy. So the political reasons are responsible for it. Then what type of a political party is there? Whether the thinking of a political party is of expansionary type, or the thinking of a political party is of contractionary type. तो किस तरीके की सोच है? Contractionary means in order to control the inflationary pressures, government reduces the employment को reduce कर देती है because they follow the contractionary policies. So this type of a system also affects the cyclical fluctuation, the cyclical. And we can also see कि जब भी election आने वाले होते हैं, नई नई policies announce होती हैं, बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, उनको बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं. सो देयर इज एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी, प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं. बट वंस द इलेक्शंस आर ओवर, again there is a contraction in the economy. So many factors are responsible for the fluctuation. But over here we will be focusing on the economic fluctuations. जो हमारी economic fluctuations हैं, तो इसमें हम political factors को discuss नहीं करेंगे. We will be only considering economic factors को consider करेंगे. Now as far as the meaning of business cycle is concerned,
right? So Byrne and Mitchell, their work is in the study of in the statistical study of cyclical fluctuations is very renowned. Byrne and Mitchell define the business cycle is a cycle consists of expansions occurring at about the same time in many economic activities. That means जो majority of activities में expansion हो रही होती है, right? So that is known as expansionary phase. उसे हम expansionary phase कहते हैं. So he defines a cycle consists of expansions occurring at about the same time in many economic activities, followed by similarly general recession, contractions, and revivals, which merge into the expansion phase of the next cycle. That means in one single cycle, there can be four phases. Four phases हो सकते हैं, like expansion. There can be like expansion, then recession, then depression, then revival. These phases make one cycle, and revival again merge into the expansionary phase of the next cycle. Next cycle में merge हो जाता है. This sequence of change is recurrent but not periodic. ये जो change है economic activity में, when the economic activities enter from the expansionary phase to the contractionary to the recessionary phase, then to depressionary phase, then to the revival phase, these type of cycles are recurrent. Recurrent means they happen again and again. ये बार बार इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं, but they are not periodic. Periodic means उनका time period fix नहीं है. Like for example, if one cycle is of 2 years, अगर एक cycle 2 years है, that doesn't mean that every cycle will be of 2 years. Some cycles can be of 3 years, some can be of 2 years, even some can be of 12-year cycle also. 12 years की भी हो सकती हैं. So these cycles are recurrent. ये बार बार इकोनॉमीज में आती हैं, but they are not periodic. ये periodic नहीं है. In duration, business cycles vary from statistical study shows that in duration business cycles vary from more than 1 year to 10 or 12 year. Minimum cycle जो है statistical studies के according that is more than 1 year. 1 year से ज्यादा होती है, and it goes up to 12 years. 12 years तक जाती है. They are basically they have amplitude of their own. Amplitude of their own means जैसे हर साइकिल का पीरियड भी सेम नहीं है, ऐसे ही हर साइकिल का एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होता. एम्पलीट्यूड मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर इज डाउन टर्न इन दी इकोनॉमी, अगर डाउन टर्न या रिसेशन आता है, एंड इन दैट रिसेशन देयर इज अ लॉस ऑफ जीडीपी बाय सपोज 6%. अगर 6% लॉस है जीडीपी में, that doesn't mean that in every recession there will be a 6% loss in GDP. There will be a difference in the amplitude कि कितना लॉस होगा या एक्सपेंशन में कितना गेन होगा. In every phase of every cycle the level of amplitude is different from each other, so they are differ. Every cycle differ in the form of a period, and every cycle differ in the form of a amplitude also, but they are recurrent in nature. वो नेचर में recurrent होती हैं. That means they happen again and again. Right now, this is basically the definition of business cycle which was given by Mitchell and Byrne. ये Mitchell और Byrne ने दी थी. Right now, if we look at these cyclical fluctuations or business cycles are basically it is a very important matter of concern for economists, for the economies. ये बहुत important concern है, because every economy wants to go or wants to grow on a smooth path. They always want to expand, and they want that this expansion should be smooth in the upward direction. Upward direction में जैसे हम चाहते हैं ना कि when we are driving the road should be smooth. रोड स्मूथ होना चाहिए, और उसमें जो है किसी तरीके की भी जो है जो गड्ढे हैं वो एग्जिस्ट ना करें, डाउन टर्न ना आए, गड्ढे एग्जिस्ट ना करें, हमें जर्क ना लगे. सो इन द सेम मैनर every economy wants to, or the authorities want that their economy should move in the upward direction smoothly without facing in
without facing downturn. But that is a wish, वो एक wish है. But there are downturns in the economies because smooth paths are not possible. Smooth path possible नहीं है because business cycles or economic cycles or trade cycles or cyclical fluctuations, कुछ भी कह लो, they are very much part of the economic path of the economies. Economic path का जो ये part है, they are the part and parcel of the economic path of the economies. Economies grow with these cyclical fluctuations. In cyclical fluctuations के साथ economies grow करती हैं. Sometimes economies grow in the upward direction and sometimes economy goes in the downward direction. When economies are growing, that is not a matter of worry. That is a good thing. वो एक अच्छी चीज है. That is a good situation for the economies when economies are growing. But the matter of concern is when the economies are going in the downward direction or about to move in the downward direction. That becomes a matter of concern for policymakers because it brings many losses with it. There will be a problem of unemployment in the economy. There will be a reduction in the output in the economy. There will be disinvestment in the economy, and this type of unemployment problem, reducing income, reducing GDP, not only create economic problems, but they create social and political problems also. वो social और political problems भी create करती हैं. जैसे हमने देखा है कि in recession people even go for suicide also, right? The social life of the people become very problematic. The political life of the country becomes very problematic. The political situation of the country becomes very problematic. Morality goes down. People die because of hunger, because of deprivation. So all these problems get created when there's a recession or depression. So it is not only an economic problem, but it becomes a social problem also. It becomes a political problems also. And that is why every economy wants to save themselves from these recessionary and depressionary phases. इस recessionary और depressionary phases से अपने आप को save करना चाहती हैं. That is why lots of work is done in these economies. Lots of research keep on going that how we can get the indication beforehand that there can be a recession in the economy, how we can get the information or how we can identify the indicators through which it can be revealed that there can be a problem of recession and depression. ये indicators हमें पहले ही indicate कर दें. What are the factors which are responsible for these recessions and depression or these type of a movement, cyclical fluctuations in the economy? Because if those factors are controlled in the economy, then with the help of a better policy, with the help of a better system, these problems can get resolved. The problem of recession and depression can be resolved, and how the policymakers can save the economy while entering into these recessionary and depressionary phases. So that it is a matter of very high concern for the policymakers, basically for the economies, that how to avoid these phases of recession and depression. But still with time we can see that पहले क्या होता था, जो रिसेशन या डिप्रेशन होते थे वो बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूटी में आते थे. बट नाउ वी कैन सी the duration of these cycles has increased because of the better policy maker, because of the better studies, because of the better study on indicators की studies जो हैं वो increase होती जाती हैं. But still these are not unavoidable. ये unavoidable नहीं होती हैं because changes keeps on coming, new parameters keeps on entering into the economy, new factors keeps on entering into the economy, and everything cannot be controlled. इन चीजों को control नहीं किया जा सकता. And these cycles are a very much important feature of capitalist open economy. जो open economies हैं, capitalist economies हैं, उनका ये एक essential feature है. Right now एक चीज और याद रखो कि इन टूडेज टाइम पीरियड जब हम साइक्लिकल फ्लक्चुएशन या डाउन टर्न की बात करते हैं, तो इस कोरोना के पीरियड को अगर हम छोड़ दें, बिकॉज दिस इज वेरी
नेचर्स शॉक जिसे हम कह सकते हैं, ये वो शॉक है। लेकिन अगर हम, दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक शॉक, इकोनॉमिक शॉक नहीं है, दिस शॉक वाज डिफरेंट, बट अल्टीमेटली ऑब्वियसली इट हैज इफेक्टेड द इकोनॉमी, इसने इकोनॉमी को भी शॉक दिया है। बट इफ वी जनरली टॉक अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर्स ओनली, अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, तो इन टुडेज टाइम पीरियड, जो जैसे 1930s में अगर हम उस टाइम का या उससे पहले के डिप्रेशन को स्टडी करते हैं, तो जीडीपी में ओवरऑल रिडक्शन आता था। जैसे सपोज एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि सपोज अगर जीडीपी 1 लाख वर्थ का है, कि 1 लाख हमारा जीडीपी है, वैल्यू है हमारे जीडीपी की, और वो रिड्यूस होके 80,000 पे आ गई, राइट। सो वो होता है ऑब्सल्यूट ऑब्सल्यूट फॉल होना, ऑब्सल्यूट डिप्रेशन होना, उसको हम एक कहते हैं जैसे ऑब्सल्यूट बिजनेस साइकिल या क्लासिकल बिजनेस साइकिल कहते हैं। बट इन टुडेज टाइम पीरियड ऑब्सल्यूट डिप्रेशंस नहीं आते कि आपका जीडीपी ही नेगेटिव हो गया। और आई एम टेलिंग यू कि इस टाइम पीरियड को छोड़ दो, कि क्योंकि इस टाइम पीरियड में नेगेटिव आया है बिकॉज ऑफ द some other shock, but otherwise in the normal time period, जो in today's time period जो लो या अप या डाउन टर्न आता है, दैट इज इन द ग्रोथ रेट, वो ग्रोथ रेट में है। लाइक फॉर एग्जांपल अर्लियर वी वर ग्रोइंग एट 8% रेट ऑफ ग्रोथ, देन इकोनॉमी स्टार्ट्स ग्रोइंग एट 5% रेट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमी स्टिल ग्रोइंग। अब इकोनॉमी अभी भी ग्रो कर रही है, बट पहले रेट ऑफ ग्रोथ 8% था, नाउ रेट ऑफ ग्रोथ इज 5%। सो दीज आर नोन एज स्लो डाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। सो इन टुडेज टाइम पीरियड व्हेन वी यूज दिस वर्ड रिसेशन, व्हेन वी यूज दिस वर्ड डाउन, slow down, so that means we are talking about the growth rates, and in today's time period it is the growth rate which becomes faster or which becomes slower, क्योंकि absolute downturns जो हैं अब वो रेयर हैं, वो रेयरली आते हैं। जैसे अब कोरोना के टाइम पीरियड है, बट कोरोना इज अ रेयर टाइम पीरियड, ये जो कोरोना का फेज है ये रेयर टाइम पीरियड है, तो इट इज रेयर नाउ। सो 1930s तक या मोस्टली 1950s तक हम फिर भी देख सकते हैं कि देयर वाज ऑब्सल्यूट डिप्रेशन, की ऑब्सल्यूट रिसेशन, की आपका जीडीपी ही नेगेटिव साइड में, डाउन ग्रोथ रेट ही नेगेटिव हो गया। बट इन दीज टाइम पीरियड्स we use the words for recession and for contractions, expansion, we use the words slow down rather than using the absolute depression word use करने की बजाय हम slow down जो word है उसको use करते हैं। but slow down represent the recession only, recession को ही represent करता है slow down, but it is the change in the growth rates, ये growth rates के change को represent करता है rather than the absolute downturns in the cyclical fluctuations, right? So if we look at the characteristics of business cycle, की business cycle के characteristics क्या होते हैं, तो first is business cycle is synchronic है, that means whenever the process of fluctuation gets initiated in any sector, किसी भी सेक्टर में जो है बिजनेस साइकिल या साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जनरेट हुई हो, अल्टीमेटली इट रीचेस अप टू ऑल दी सेक्टर्स, ये सारे सेक्टर्स में मूव करती है, एंड इट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो, ये दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करती है। दैट मींस द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज in the country also get affected by the cyclical fluctuation which starts in the one sector, ये starting point जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं, कि एपिसेंटर एक जगह पे होगा, एक सेक्टर में होगा, but ultimately slowly it moves to the other sectors also, and other sectors also faces these type of cyclical fluctuations। like छोटा सा अगर इसका विजुअल अगर हम देखेंगे किस तरीके से इफेक्ट करता है, like कोई लेक है, अगर लेक में तुम पत्थर फेंको, राइट, तो वो एक जगह पे जाके गिरेगा, तो एक जगह तुम्हारा जो है सर्कल बनेगा वाटर का, जिसको हम रिपल इफेक्ट कहते हैं। बट अल्टीमेटली यू विल सी दैट सर्कल गोज ऑन बिकमिंग बिगर एंड बिगर, एंड दैट गोज ऑन होल ऑफ द लेक, सारी लेक को वो कवर कर लेता है। सो दिस टाइप ऑफ thing happens in the cyclical fluctuations also, it get initiates from one sector, but ultimately it reaches to the other sectors also, उसकी but किसी सेक्टर में स्पीड क्या होगी, या कौन सा सेक्टर पहले इफेक्ट होगा, कौन सा बाद में इफेक्ट होगा, इट डिफर्स फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोनॉमी, डिफर्स फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, किस सेक्टर पे इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, दैट ऑल्सो डिफर फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर, ये सेक्टर टू सेक्टर डिफर करता है। बट यस, ऑल दी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी
bound to get affected with this cyclical fluctuation which gets initiated in the one sector. So we call it that business cycle is synchronic in nature. ये synchronic होती है. This is the first characteristic or feature of business cycle. Then business cycle exhibits a wave-like variation in the economic activity. अगर हम साइकिल में सारे फेजेस आते हैं, चारों फेजेस जो हैं वो एक साइकिल बनाते हैं. तो बिजनेस साइकिल्स एंड जितनी बार ये हमारी साइकिल्स रिपीट होंगी ये वेव लाइक एक्टिविटी में होती हैं. दैट मींस समटाइम्स वी गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, समटाइम्स वी गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेन इकोनॉमी गोज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इट बेसिकली exhibits a wave like variation in economic activities. That means expansion or prosperity is followed by the contraction, contraction is again followed by the expansion, expansion is again followed by the contraction. So this type of a wave like activity exists in the under cyclical fluctuations. Then the business fluctuations are recurrent in nature. Recurrent means these cycles come again and again. ऐसा नहीं कि एक बार आई उसके बाद ये फिनिश होगी, इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होकर एक ही लाइन पे चलती रहेगी. It is not like this. They are recurrent in nature. That means first the like for example, if a period of good trade means healthy economy, growing economy. If a period of good trade is followed by a period of bad trade, it does not mean that the system will continuously suffer from this bad trade. After bad trade, there will be a situation of good trade, and after good trade, again there will be a situation of bad trade. So that means these fluctuations are recurrent in nature. Recurrent means these happen again and again. Right? This is the third feature. Fourth feature is business cycles are recurrent, but they are not periodic. वो periodic नहीं. जैसे जो seasonal fluctuations होती हैं, ये हम cyclical fluctuations की बात कर रहे हैं. जो seasonal fluctuations होती हैं, वो कैसी होती हैं? Periodic होती हैं कि नहीं होती हैं? Periodic होती हैं. They are periodic in nature, but cyclical fluctuations are not periodic in nature. तुमने time series में भी जब हम 4 components study करते हैं कि time series में एक trend होता है, एक सीजनल फ्लक्चुएशन होती है, एक साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होती है और एक चांस फैक्टर जिसको हम रैंडम फ्लक्चुएशन कहते हैं. ये 4 तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं वो टाइम सीरीज में एग्जिस्ट करते हैं. ये पढ़ा है ना हमने टाइम सीरीज जब पढ़ा होगा, राइट? सो इन 4 फ्लक्चुएशन में ट्रेंड जो होता है वो ये शो करता है कि वेदर इन द लॉन्ग रन वी आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन. सीजनल जो फैक्टर्स हैं वो पीरियोडिक होते हैं और वो ज्यादा कंसर्न का फैक्टर नहीं होते, बिकॉज वंस द सीजन विल चेंज, बैड विल गेट ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू गुड एंड गुड विल व्हेन द सीजन विल अगेन चेंज, द गुड विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू बैड. तो वो अपने आप ही साइकिल है जो मूव करती रहती है, राइट? तो ये सीजनल फैक्टर हो गया हमारा. Then the cyclical fluctuation. Here we are talking about the cyclical fluctuation. हम cyclical fluctuations की बात कर रहे हैं, and the reasons of the cyclical fluctuations are not clear. ये clear नहीं होती हैं. ये भी short term fluctuations ही होती हैं. Trend is the long term. Trend हम long term study करते हैं, but when we are talking about the trade cycles or cyclical fluctuation, this is the short term phenomena. ये short term phenomena है that why even if we are going in the upward direction, जैसे मैंने कहा कि अगर हम जीडीपी हमारी बढ़ भी रही है, ग्रो कर रही है, बट बाय समटाइम्स इट हैपेंस कि कभी 8% पे ग्रो कर रही है, फिर ग्रोथ रेट फॉल करके 3% पे आ गया, दैट मींस स्लो डाउन आ गया इकोनॉमी में, देन अगेन देयर इज अ हाई ग्रोथ रेट, देन अगेन देयर इज अ लो ग्रोथ रेट, दैट मींस it is growing, GDP is growing, we are moving in the upward direction, but we are not moving smoothly. हम कभी स्लो हो जाते हैं, कभी फास्ट हो जाते हैं, फिर डाउन टर्न आ जाता है, फिर फास्ट हो जाते हैं. सो व्हाई we are over here, we are studying why this type of a fluctuation occurs. ये fluctuation क्यों आती है? Why we move smoothly in the upward direction? हम smoothly upward direction में move क्यों नहीं करते हैं? Right? This is the matter of the concern. And secondly, we never know. जैसे हमें seasonal fluctuation का पता है कि ये थोड़े 2 महीने का ये bad phase है. After that, it will be over because it is periodic in nature. But the problem with the cyclical fluctuation is it is not periodic in nature. We don't know till what time this type of recession or depression or slowdown will remain. Whether it will remain for
3 quarters only. आजकल हम quarter wise बात करते हैं, quarterly GDP लेते हैं, right? Whether it will remain for 4 quarters, whether it will remain for 6 quarters, or whether it will remain for 12 years, 13 years, ये कब तक रहेगा, right? और जो लॉस, जो डेड वेट लॉस होता है ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट इज वेरी हाई. वो बहुत हाई अगर चला जाए, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी. ये इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी स्टक हो जाए, देन यू नेवर नो दैट when will be the revival कब होगा, because it is not periodic in nature, right? कितना डाउन टर्न में कितना लॉस होगा, the amplitude is not fixed, amplitude fixed नहीं होता है. So that is the problem with these cyclical fluctuation. That is why economies are always concerned about this cyclical fluctuation. They show their concern in with these cyclical fluctuation, and when we follow these policy interference through monetary and fiscal policies, the major objective is basically to save the economies from these downturns. In downturns से ही save कर पाना objective होता है, because there is no surety regarding these downturns. इनकी इस बारे में जो certainty है वो exist नहीं करती, जो seasonal fluctuations को लेकर certainty exist करती है, but cyclical fluctuations को लेकर certainty exist नहीं करती है. That is a very big problem, right? So these are not periodic. That is why we never know that when the contractionary period will end, और हमें ये भी नहीं पता कि एक्सपेंशनरी पीरियड कब खत्म हो जाएगा. दैट मींस गुड पीरियड कब खत्म हो जाएगा, वी डोंट नो. एंड बैड पीरियड कब तक प्रोलॉन्ग करेगा, उसकी भी कोई एग्जैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है. सो दैट इज व्हाई पॉलिसी मेकर्स इंटरफेयर to save the economy from these type of situations, right? कि जो एक्सपेंशन पीरियड है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलते रहें, और जो रिसेशन पीरियड्स हैं, पहली बात तो वो आए ही ना. अगर वो आ जाएं, देन हाउ फास्टली वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट पीरियड, उस पीरियड से कैसे फास्टली रिकवर किया जा सकता है. देन इज cyclical fluctuations are self reinforcing and cumulative. Very important point. Self reinforcing means once the cyclical movement starts in one direction, it continues to feed itself. अपने आप को फीड करती रहती है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ चेंज है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेट होता है. दैट मींस, लाइक फॉर एग्जांपल, once the period of recovery or expansion starts in the economy, this expansionary phase keeps on feeding itself automatically, and the rate of expansion becomes stronger and stronger. तो recovery phase में अगर तुम ध्यान से cyclical fluctuations को कभी देखो, कल हम डिस्कस करेंगे, मैं सारा डायग्राम में भी शो करूंगी. जो रिकवरी होती है वो बहुत स्लो स्टार्ट होती है, रेट ऑफ चेंज बड़ा स्लो होता है जब भी तुम कर्व बनाओ, एंड वंस इट स्टार्ट्स मूविंग, उसके बाद जो कर्व है वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है. दैट मींस द रेट ऑफ चेंज बिकम्स स्ट्रॉन्गर, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है. सो दैट मींस these cycles are self reinforcing. ये self reinforcing है. Once phase started, its rate of change accelerates, and after reaching certain height, this rate of change becomes slower. Automatically ये slow हो जाता है, and after becoming slower, it enters into the second phase automatically. So it is cumulative, it is reinforcing, ये self reinforcing है, and one phase automatically merges into the another phase. ये another दूसरे phase में merge हो जाता है, right? Then cyclical movements are generally asymmetrical. That means symmetry नहीं है कोई cyclical movement. जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जो कोई फेज है वो ज्यादा ड्यूरेशन का, लंबी ड्यूरेशन का हो सकता है, कोई फेज कम ड्यूरेशन का हो सकता है, कोई साइकिल ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रह सकती है, कोई साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कम ड्यूरेशन के लिए रहती है. सो दे आर असिमेट्रिकल. देयर इज नो सिमेट्री अमंग देम. दे आर असिमेट्रिकल in natures, right? Like for example, sometimes downward movement can occur suddenly downward movement आ गई. Sometimes downward movement can occur slowly exist करती है. So there's a difference in their symmetry. They are not symmetrical, they are asymmetrical, and the impact of cycle is differential. जो impact है cycle का, this is not same on each and every sector or industry. Cyclical, the impact of these fluctuation upon different industries and sectors in the country is आता है.
कोई इंडस्ट्री कम सफर करती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम अभी के टाइम पीरियड में देखें, लाइक इंडस्ट्रीज लाइक टूरिज्म, ट्रैवलिंग, जबकि अभी फैक्टर इकोनॉमिक नहीं है, बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल कि अगर अभी भी एग्जांपल लें तो इन इंडस्ट्रीज ने कंपैरेटिवली ज्यादा सफर किया है एज कंपेयर टू दी अदर इंडस्ट्रीज। तो अपन एक चीज याद रखना कि साइक्लिकल डाउन टर्न का मतलब ये नहीं होता कि सारी की सारी ही इंडस्ट्री डाउन टर्न में जा रही है। जितनी भी इंडस्ट्रीज है सभी डाउन टर्न में है। लाइक रिसेशन जब हम कब बोलेंगे, व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, जो मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज हैं वो डाउन टर्न में है, और जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो अपटर्न में भी हो सकती हैं, बट द स्ट्रेंथ ऑफ डाउनटर्न इज स्ट्रॉन्गर देन द स्ट्रेंथ ऑफ अपटर्न, देन ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो आपका डाउनटर्न में आएगा। इज दैट क्लियर? राइट। तो जब हम रिसेशन की बात करते हैं, रिसेशन डजंट मीन दैट ऑल द इंडस्ट्रीज आर गोइंग इन द डाउनटर्न। those industries who are going in the downturn, that means they are dominating, वो उनका जो स्लो डाउन है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो ज्यादा पावरफुल है as compared to the upward moving industries. So these cycle impacts of these cycle is differential, ये differential होता है, different industries में different impact है cycles का, right? And the business cycles may be international in character, ये जो because of the globalization, because of the interlinkages, the cyclical change starts in the one country, एक country में start होता है, then it moves in the other countries also. So these type of business cycles may be can be international in character, ये character में international भी हो सकती हैं। Like for example 2008 में जब इंडिया में भी थोड़ा recessionary pressure आया था in few industries, that was because of the recession in USA, क्योंकि USA में recession आया था, और जो हमारी वो like for example IT sectors whose major demand comes from these advanced countries, we are the suppliers. If over there the problem of recession comes, then automatically because of interlinkages, because of export import relationships, the impact moves on the other countries also. तो इंडिया में भी IT सेक्टर में, एविएशन सेक्टर्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, रिसेशन हुआ था because of the interlinkage with the USA. So problem was in USA, but ultimately the impact has been on the Indian industries also. Indian industries पे भी उसका impact आया था because of the all these countries are interlinked with each other. So these were the characteristics of business cycles. ये business cycle के characteristics थे. Then comes the phases of a cycle. Phases हैं अब इसको हम कल कर लेते हैं, कल कंटिन्यू कर लेते हैं। फेजेस थोड़े से हैं, छोटा सा ही है, फोर फेजेस, 2 फेजेस हैं, ये करके फिर हम जो है अपनी फर्स्ट थियरी स्टार्ट कर देंगे। इज दैट फाइन? यस मैम। ओके, आज इतना ही करते हैं। हाँ जी बोलो साहिब। अगर एक इंडस्ट्री डाउनवर्ड में जा रही है और दूसरी अप में जा रही है, तो जो अप में जा रही है उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना, जो डाउन का इफेक्ट अप में तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत। नहीं देखो, जैसे ओवरऑल अपना ना माइक बंद कर दो, मेरी आवाज मुझे आ रही है, ठीक है। नाउ लाइक फॉर एग्जांपल अगर डाउन टर्न इंडस्ट्री में, लाइक फॉर एग्जांपल